Ladies and gentlemen. Good morning, ladies and gentlemen. Breakfast हुआ है? हाँ या ना? So एक साथ एक सुर में Good morning. Thank you so much. Welcome to the annual Foundation Day 2024 of KCCI. Themed Resilience and Rebuilding MSMEs for Sustainable Growth. My name is Dhwani Dalal and I will be the show host for today till the evening. So you'll have to bear me. आपको मुझे सहन करना पड़ेगा. अभी से sorry. We are thrilled that you all have joined this wonderful event of today. आप सभी का हम एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं. जो भी महानुभाव खड़े हैं, उन सभी से नम्र निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें. दो सूचनाएं. एक, आपका अभिन्न अंग यानी कि मोबाइल उसको साइलेंट कर दीजिए या फिर वाइब्रेटिंग मोड पे रख दीजिए. We humbly request each one of you to kindly put your mobile phones on silent mode or vibrating mode. Thank you. While the session is on, refrain from leaving your seats. जब सेशन चालू हो, especially the inaugural session, आप अपनी जगह से ना जाएं, वो बेहतर होगा. One more time, I welcome everyone to the inaugural session of KCCI Annual Foundation Day 2024. And to kick off our celebration, we welcome on stage Shri T.K. Solanki, Assistant Director, Ministry of MSME, Government of India. Welcome, sir. We also welcome on stage Mr. Rajesh Pushpaganan, DGM SME, SBI, Mr. Evduk Alexander, Head of the CSCP Russia, Mr. Evizel Abdul Qadir, Informatics Engineering Department, UIR Indonesia, Mr. Stephen Hickling, British Deputy High Commissioner, Mr. Q Nan Kim, Director General,
Korea Trade Investment Promotion Agency, Kotra, we welcome on stage Shri Durgesh Agarwalji. We also welcome on stage Mr. Bharat Patel and Mr. Amit Joshi. Please welcome gentlemen on the stage. Kindly take up your seats, please. Thank you. We welcome Shri T.K. Solanki sir, Assistant Director, Ministry of MSME, Government of India. It is indeed our pleasure to have you, sir, with us. In order to kickstart this wonderful event of today, which comprises of knowledge giving, sharing, networking, and also enjoyment, and celebration with the proud mementos or the pride given to you. So, in order to start this event, first we will bow down to our motherland, India. आप सभी से नम्र निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान से खड़े हो जाएं. धन्यवाद. Kindly rise for the national anthem. Thank you. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. धन्यवाद. आज के इस महत्वपूर्ण इवेंट की शुरुआत करने के लिए मैं मंचस्थ महानुभाव को दीप प्रागट्य के लिए आगे पधारने के लिए नम्र निवेदन करती हूँ. I request all the gentlemen to kindly step forward for the lamp lighting. Thank you. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते. दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः.
You can all stand for the photo op. Thank you. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। इस सृष्टि के सभी जीवों पर प्रभु के अविरत आशीर्वाद बरसते रहें, ऐसी प्रार्थना अभ्यर्थना। Thank you all. And we now proceed with the official opening of our Foundation Day celebration. For the same, I now invite Mr. Durgesh Agarwal, Chairman, Western Region, KCCI, to deliver the welcome address. Welcome, sir. A very good morning and a warm welcome to all of you for the celebration of 6th Annual Foundation Day Knowledge Chamber of Commerce along with SME Convention 2024. First of all, I'd like to say that we had already invited the Honorable CM for the event, but unfortunately, there has been a delegation that needs to be going tomorrow to Delhi for a presentation, for which the entire department is busy for the preparation. The Honorable CM has given his letter of appreciation to our chamber. So for that, we would also want to thank the CM. Thank you. It's also a pleasure to have respected dignitaries on the dais over here. All of you present over here have come from the length and breadth of the world. I welcome you here to Ahmedabad. Along with that, I also want to welcome my team, the members that have been working with me over here day and night to make this event, to make this organization successful. I would like to extend my heartfelt welcome to participants of relevant industries, sponsors, awardees, and everyone present in the venue. I also would like to say that we are all about providing support and system to SMEs, to MSMEs, to any industries who want to grow. Here we are to talk about how to evolve. The world is evolving, the industry is evolving. Let us all together join hands so that we can make this journey of evolution in industry possible. Thank you. Thank you very much, sir, for your warm welcome words. We appreciate them. After the warm welcome words, we would like to welcome our very esteemed dignitaries on this stage with the bouquet and a memento. And foremost, I would request Shri Durgesh Agarwalji to kindly welcome Shri T.K. Solanki, Assistant Director, Ministry of MSME, Government of India. Thank you so much. I would now request Mr. Bharat Patel, Honorary Secretary General, KCCI, to kindly welcome Mr. Rajesh Pushpagandan, DGM, SME, SBI. Thank you very much. I would request Mr. Bharat Patel to kindly welcome Mr. Evtuk Alexander, Head of the CSCP, Russia. Welcome, sir. Thank you. I would now request Mr. Amit Joshi, Director KCCI, to kindly welcome Mr. Evizal Abdul Qadir, Informatics Engineering Department, UIR, Indonesia. Thank you. We'll request Mr. Amit Joshi to kindly welcome Mr. Stephen Hickling, British Deputy High Commissioner. Thank you. And I now request Mr. Nakul Prakash Lakhe, Director KCCI, to kindly welcome Mr. Q Nam Kim, Director General, Korea Trade Investment Promotion Agency, Kotra. Thank you very much.
Once again, a warm welcome to all of you. We now have with us Mr. Bharat Patel, Honorary Secretary General, KCCI. I will humbly request him to kindly deliver the theme address for today's event. Welcome, sir. Good morning, all. I didn't hear you. Good morning. I think this particular day is very, very important for all of us, especially when we are in a country which is growing at such a speed that everybody wants to be a part into it. At the outset, I welcome all those dignitaries who are there on the dais and off the dais. This particular event is at such a point when we see that there is a growth in the whole nation, all across in different regions. And MSME is one particular sector, I would say, which is contributing to the GDP of the nation in a very large portion. And not only that, it makes it very, very important that MSME is sectorial as well as it is regional. When I mean regional, it is that every specific region would have its own MSME growth, and thereby the overall region growth is also happening. I think this is where we see that there is a diversity in the country which is also helping us in a lot of ways and eventually helping the nation build the GDP. Today being 18th of July, which is a very important day when we are celebrating the 6th annual Foundation Day of KCCI. It even brings a lot of pride because I was just trying to search around as what was very important on 18th of July, which had happened in the globe. As we are nearing the month of August, 15th of August when we got the independence, the Independence Act, which was signed by King George VI in the United Kingdom, was on July 18th in 1947. So this is a very, very important day for us. And when we are in this stage of technology, we believe that technology has been driven tremendously by various aspects, primarily by the information and technology, which gets driven through the hardware. And there's a company which I'm sure all of you know, which is by the name of Intel Corporation, which is the first company in the world which started developing the microprocessors, was also incepted in July 18th, 1968. So this is a very, very important day which is coinciding with our Foundation Day as well. Speaking more about this, of course, I'll not take much of your time because we have a lot of other dignitaries to which you'll get a lot of knowledge. But I had a couple of points which I was thinking that when we say that we need to move ahead at a higher pace, there are specific strategies that we need to follow for MSME. And there are a few highlighted points which I would just like to tell you. And amongst first is the technology. Each of these MSME, unless they embrace the digitalization and automation into their organizations, I think the pace cannot be matched. And that's where they should be embracing the technological advancements and they should adopt it. Similarly, we have friends from the financial sector here as well. So financial inclusion is also a very, very important area. The policies should also be in such a way that the financial inclusion for the growth of MSME is rightly done so that the growth is not been hampered at all at any point of time. We also have the educational institutions with us, and we believe that if you want to go for sustainability and resilience in MSME, we have to be skilling ourselves very well. Skilling, upskilling, and reskilling is extremely important. So skill development is another place which we should be focusing on as far as the growth of MSME is concerned. And one more point, which is the market access. So creating platforms in its right format. For example, the KCCI giving you a platform of interacting between each one of you, which is complementing the industries, as well as the global platforms for exhibitions and expositions is extremely important. So market access is also very, very important. So these are some key, very, very important areas which I believe for sustainability should be there. Having said this, it is not ending here. There are a lot of challenges I know that
when we would like to become the world's manufacturing hub. There's tremendous amount of skilling which is needed in the country, so there is not enough manpower as of date. We are trying to train, each one of us are going to take steps into that direction. So there are areas which need a lot of attention. So we have limited resources in some areas. We have regulatory issues, at some point where the government also needs to assist us. We have market competition as well, so you need to create a niche for yourselves as to which area you should actually focusing on, and the infrastructure gap which needs to be mitigated. I believe considering this, and on top of all that, should be the sustainable area which you should look into, especially ESG and all that. So if we do not look into sustainability, I think MSME growth will get stopped at some point of time because of certain policies which will come as a hindrance. So I think all of you, all those who are going to be participants here in terms of the delegation, as well as those who have, been awarded today, I wish them all good luck, and thank you very much. Thank you so much, sir, for your theme address and also the suggestions. We appreciate them. We are honored to have several distinguished international speakers with us today. To begin, I would like to invite Mr. Kyu Nam Kim, Director General of KOTRA, to share his address with us. Welcome, sir. Good morning, everyone. My name is Nam Kim from KOTRA. KOTRA is a Korea government organization to promote the small and medium businesses trading and investment. So I'm working in Ahmedabad for the win-win strategy for the India and Korea. So today I'm very, very happy to be here with the good event and wonderful conference program today. Congratulations, 60th annual anniversary of MSME convention today. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your kind words. Next, we welcome Mr. Stephen Hickling, British Deputy High Commissioner, to deliver his address. Mr. Agarwal, Mr. Patel, distinguished guests, thank you very much for inviting me to speak at this prestigious event. And what a wonderful event too, what a wonderful venue. I'm so pleased to be here. I've already seen some friends and I'm looking forward to speaking later. So MSMEs, they're vital to the health of any economy. In India, government figures show that MSMEs contribute around 30% to GDP. So they're the backbone of the economy in India and in the UK. MSMEs are essential for providing employment opportunities that India needs. For example, MSMEs create 1.1 million jobs annually in India, with more than 30% of those in manufacturing industries. Around 45% of MSME products are exported around the world from India. So not only do MSMEs generate growth and employment opportunities that India requires, they also drive socio-economic development, reduce inequalities, and promote India's famous spirit of entrepreneurship. Currently, the UK is the only country with a diplomatic presence in Gujarat. And my office, the British Deputy High Commission in Ahmedabad, has a focus on trade and investment between the UK and India. And we have a marvellous UK trade and investment team based in my office. UK government-supported research shows that 68%
of the 635 UK companies in India are MSMEs. And we're proud to support those UK businesses investing in India, and for my office, those high-quality investments in Gujarat. India is the second largest investor in the UK. More than 900 Indian businesses operate in the UK. So the business links between India, Gujarat, and the UK are strong. India's leadership at the G20 last year was a testament to its determination to tackle shared global challenges. And I'm confident that our living bridge of people and ideas between India and the UK will make the UK-Gujarat partnership a potent combination to drive economic development in both of our countries. For our part, the UK has a unique mix of world-class expertise and talent. The UK is the most globally connected economy in the G20 and ranked second globally for soft power and the first in the G7 for international research, collaboration and impact. And let's not forget that London is number one globally for green finance. So that's why we have every reason to be ambitious about our partnership with India, and in particular with Gujarat. The UK is collaborating with Gujarat on some exciting and high-quality initiatives. A really good example of that is the Statue of Unity. It was designed by UK architect Arup, which now stands tall as a symbol of a new, confident India. Or take, for example, the JCB factory designed by Mott MacDonald, whose machinery is now powering India's infrastructure development. And we want to go further. Another good example is the large new investment by UK chemicals manufacturer Croda, which is building a sustainable advanced facility in Dahej, which will bring hundreds of high-quality jobs to the region. So beyond these investments, there are other activities that we're involved in at the British Deputy High Commission, and education is a key priority for us. We recently signed an MOU to enable closer collaboration between our higher education institutions, and we want to expand our cooperation to the creative economy, nurturing artists and boosting cultural exchange. So I think we can be very confident that business links will continue to grow, creating jobs and prosperity from Baroda to Bristol. I look forward to developing those links in the coming years, and I wish you all and the organisers, KCCI, the very best for a fruitful conclave. Thank you very much. We also thank you very much, Mr. Hickling, for sharing your thoughts with us. Our next speaker is Mr. Evizal Abdul Qadir from the Informatics Engineering Department at UIR, Indonesia. Welcome, sir. Good morning, everyone. First of all, I would like to say thank you very much to the KCCI community to invite me to give some speech about Indonesia. I am Evizal Abdul Qadir from Indonesia. Actually, I am associate professor in the one of university in Riau State, Sumatra. It's not in Jakarta. I am from Sumatra, the state very close to the Singapore and Malaysia. So currently, Indonesia very growth the economic because our governments invite many foreign investors to come and invest in Indonesia. The population currently is about 278 million, top 5 or top 6 in the world, just small compared to the India. So the government set up teacher in the university have to do 3 KPI. It's not only teaching and research, but have to do the community service. One of these, the community service is to guide
the community to set up an enterprise, a small or medium enterprise, or even micro, to grow the local economics. So in Indonesia now, local government, even district, sub-district, they have their own business, banking. Before that, government payments all to the national banking. Now move to the local banking. Every state, they have their own banking system. They have their own bank to grow the local economics. So in terms of the enterprise and the startups, university, our Ministry of Education give the KPI at least once a year to assist the community to set up the enterprise. For example, before that, the community just send or sell the raw materials. In Indonesia, maybe like the raw material like banana, corn, tapioca, everything. Now, how university assess the community is not only sell the raw material, but set up the micro or medium enterprise, become the product. Then university assess how to marketing, how to do effective productions. Although the home industry, home production, to assess how the packing, commercials, even assessed by the startup online commercials. The university, government, and industrials, ABG they call academics, business, and government in 3 cycles is target one system, and every sub-district or every community as this need to set up their own enterprise. Startup now very growth. I'm a teacher. My degree or master student, when they do the final projects, they create application, then they're launching as commercial. So 1 million of the startup every year created by, is not only by young generation, also from the students. So another project, big project is Indonesia government, they move the capital city from Jakarta to the center part of Indonesia. Now, starting from 2020, they create rules moving the capitals, and 2022, they start projects 2 years ago, starting by the presidential office. Expected this year already moved. The president office is not only, no more in Jakarta. This year target is the president office in the Kalimantan Islands. They call 0 point of Indonesia. Is exactly 0 point. They find the 0 point west and east of Indonesia. They set up totally empty lands. They create and they invite foreign investors to set up the business at the hotels, shopping complex, restaurant, hospitals, university at the area. So to grow the business and the economics. So the big project, long-term projects, up to maybe 10, 15 years, step by step. Firstly by president office, then next year a few ministry move, and parliament, all government to the center point of Indonesia. So we will, Indonesia government invite foreign investor, collaborate with the university, business to set up the business or start up in Indonesia. So we have also Indonesia chambers, a national and state chamber. We have close also collaborate with the chambers, the local business authority. So academic is no more teaching, it's not enough for the teaching. They have, normally it's teaching and research. Now government also to assist the business, and many things have to do. It's not
only stick at the university have to go out. How assist business, community, government to grow up the economy? I think that's all that I can say about the Indonesia. Now it's keep growing because the community also quite big, top 10 the community, especially in our states, directly border to the Singapore and Malaysia. They also, Singapore and Malaysia is economy also in Asian country, top 1 and top 2, Malaysia and Singapore. I think that's all that I can speak for this morning. Thank you very much and good morning. Thank you very much, sir, for your insightful thoughts, and we wish Indonesia very best. We will now hear from Mr. Evtuk Alexander, head of the CSCP Russia. We welcome you, sir. Namaste, Amandavat. Хукубач хустайо, апне бадане молине. Джай Джай Гaravi, Gujarat. Thank you very much. Sorry guys for interrupting. We are just announcing one delegation to Russia since he is here, so we would like to inaugurate that with the Honorable Dais. So I request everyone to please inaugurate it. The delegation to Russia from 20th of October to 25th of October, organized by KCCI, a very high profile and high level delegation. I also request you all guys to join. Thank you. We inaugurate the same. Thank you. Thank you, Mr. Alexander. And thank you, gentlemen, for the brochure inauguration. We are now pleased to welcome Mr. Rajesh Pushpagadan, DGM, SME, SBI, for his special address. Welcome, sir. Yeah, good morning, respected dignitaries, distinguished gathering. I'm Rajesh Pushpagadan, I'm DGM SME, and I proudly represent the State Bank of India. I take this opportunity to thank KCCI for organizing such wonderful seminar, and thank you, sir, for making me a part of it. It's a good theme. Initially, I thought I will have some return speech, and I thought it can extempore will be better. It's a good theme. We are talking about resilience. From the time of COVID, where support was the theme, to resilience. So that talks about MSME, how taken the path towards regrowth. Patel sir, I think you had very well touched upon the fact of financial inclusion. So that takes me to the point where I would just maybe a bit focus on the M in the MSME. Probably that forms the foundation of MSME. What as a banker, bankers are normally conservative people. So what as a banker's financial inclusion is a first starting point of the value chain. Our experience being that the micro is not able to climb up the value chain. And finance is just a part of that. Probably I am not qualified enough to talk about the product or the process or the market, but probably with my limited knowledge, I can just delve on the financial part.
technology, you go to any seminar, you go to any topic, technology has now permeated to all our work spheres. So has to be the banking. What we think is that from a banking perspective, the more and more the banks switch on to technology, the reliance will be less and less on human intervention. That is basically taking it to the credit underwriting skills to a transparent level. But that's the phase where that the micro industries miss out on it. Some of them are on account of the bank, and some are purely on account of the MSME or the micro part of the MSME, which deals in the transactions basically where cash is the king. The more and more banking sector and the financial sector moves on to a technology driven platform, the more and more it relies on a trail of transactions, which a cash economy is not able to provide that comfort to that banker who is relying on technology to underwrite the skill. So what I perceive is that is the biggest gap where the funding gap is there. Theoretically, statistically, it looks there's a huge gap and banks are not doing their part. I would use the platform to just convey that bank has been a partner to MSME, and me representing SBI, where S, I would jokingly say S represents the SME because we are a microcosm of what India represents. We as a banker are finding that inability, right, when we are to write a credit bill, do an underwriting of a credit of a micro sector, we lack the transaction history. Each and every micro industries would be doing well, but that doesn't get reflected in a transaction history. That is a paramount thing as far as technology is concerned when we are using technology. And that's how where they are not able to come on board on platforms like going ahead, there will be a peer-to-peer lending. It happens, peer-to-peer lending still happens on a very unofficial level. But with a growing economy, with technology permeating to our various peers, peer-to-peer lending, apart from a normal banking lending, comes into picture. TREDS is a platform which is a technology-driven platform. This is where the micro industries basically, instead of moving forward, are either stagnant or going down the value chain because they are not able to catch up to the lending requirements driven by a technology. So this is where the focus is. I would urge, my simple urge to organizations like KCCI would be, sir, just to request our members, advertise it. We as a bankers are doing our part, but then we request you to just percolate that messages that cash is king. Cash, that's a legacy, because what happens is that there was the pre-technology transactions always involved a particular type of a cost, particularly of a hassle. There was a check transaction, there was a cash transaction which involved time. There was a value to the time to an entrepreneur. But with technology, with UPI on the bandwagon, what happened is that now it's a digital platform. So that time lost on account of a physical transaction has been taken out of the system. But the cash legacy for micro and to an extent for small industries is still continuing, and that is what one of the debilitating factors which I find, that they are not able to access the official credit line, which then falls into the unofficial credit line and the ills associated with that. And that applies to an extent to even medium enterprises, but so from the MSME part, the M and S for me, it remains, and the M and S of the starting, micro and small remains, and then the medium goes on to become a large, which pre-technology, which was a smooth flow, because technology has arrived as an enabler, but for that with a transaction history. That is where the movement has stopped. So as technology is not, there will not be a reversal of technology. So what is going to happen is that we would have to adapt to technology. We all are experts in adopting technology, and
MSMEs and basically the micro and small would have to adopt and upscale their technology, use of technology. They would be very well aware of the technologies. But in a daily transactions in a business, they would have to keep on using it to climb up the value chain. That would remain my sole request on this forum. And then the financial inclusion part supported by the Government of India to incubate small or medium industries, then it will climb the value chain to come to a formal finance, and that's how the growth path will be defined. So my request will be to the audience here, just to percolate that message, that we would have to move on a transaction-based track record, creation of a transaction-based track record that can only be done by using more and more of a digital platform and chunking of cash in a phased manner. I will try to end that on this, my address on this note, with a fervent request to adopt technology to enable us, the bankers, to have a better view of the industries and do a better credit underwriting, which will enable us and the industry to move forward. Thank you. Thank you very much, sir, for your special address and for the assurance through the banks. Thank you. We will now have the release of the research report jointly prepared by KCCI and Grant Thornton. For the same, we welcome on stage Shri V. Padmanand, Partner and Social Sector Leader at Grant Thornton Bharat LLP, and Dr. Dhaval Sheth, Partner, Grant Thornton. Welcome, sir. Step forward, please. Can we cheer the efforts, please? Thank you, everyone. We also have another research study by KCCI and Onsurety. I invite the representatives from Onsurety, Mr. Kulin Shah and Mr. Samar Kagalwala, please. Thank you, gentlemen, and we extend best wishes to Grant Thornton, also Onsurety and KCCI. It's now time to appreciate the gesture of our KCCI leaders and also our supporters.
I would request Shri T.K. Solanki sir to do the honors. For that, foremost, I would like to welcome on stage Mr. Vipul Thakkar, Silver Touch Technologies, for his generous support. Welcome, sir. Team, can we have the mementos, please? Yes. Thank you, Vipulji. Next, we welcome on stage Mr. Dhaval Rawal, Abhyuday Group, for his generous support. Welcome, sir. Next, we welcome on stage Mr. Nakul Sher Dalal, NS Legal, for his generous and unwavering support. Welcome, sir. We can always thank them with lots of claps for their support. We now welcome Dr. Dhruv Pandit, Heritage Cyber World LLP, for his support. We now call upon Mr. Amish Khandar from Khandar Mehta and Shah for his generous support. Welcome, sir. He's not there, but he's extended his wishes. I now call upon Anuj J. Sher Dalal from CR Sher Dalal and Company. Now we welcome on stage Jamshed Misri from International Legal Alliance for his generous support. We welcome on stage Mr. Kishore Navandar from Blue Billion Group for his unwavering support. We welcome on stage Mr. Vishal Rajgaria from Fine Cure Pharmaceuticals Limited. Welcome, sir. Thank you so much, sir.
We now welcome our platinum partner, State Bank of India. We welcome State Bank of India representative for being our platinum partner. Thank you, sir. We now welcome our gold partner, SIDBI. We now welcome the gold partner, the representative from SIDBI. From our quality partner, we welcome Quality Council of India, QCI. The representative of QCI, we welcome you. Thank you, and we welcome ERP and CRM partner, Odoo, the representative from Odoo. Welcome, sir. Thank you. We now welcome our FNB partner, the Grand Bhagwati. FNB partner, the Grand Bhagwati. We welcome the representative. I don't think they are here. They are busy preparing our meal. Okay, we move forward. We have our silver partner, ICICI Bank Limited. We welcome Mr. Siddharth Bengani. We welcome our silver partner, AU Small Finance Bank. The representative from AU Small Finance Bank. We welcome the associate partner, Multi Commodity Exchange. The representative from Multi Commodity Exchange, we welcome you, sir. We now welcome the associate partner, Onsurety. The representative from Onsurety, we welcome you, sir.
Thank you, and we welcome Associate Partner, National Stock Exchange. The representative from National Stock Exchange. And after that, we have the National University Partner, JG University. Thank you, and we call upon the representative from our National University Partner, JG University. I don't think they're here. Good luck to them, and thank you, gentlemen, for doing the honors. Thank you. You can take up your seats, please. It is now important to hear from this gentleman, of course, when we are all in this sector. Please help me welcome with a big round of applause Mr. T.K. Solanki, Assistant Director at the Ministry of MSME, Government of India. We welcome you, sir. धन्यवाद। भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय के तहत एमएसएमई विकास कार्यालय, मुख्य कार्यालय डेवलपमेंट कमिश्नर एमएसएमई न्यू दिल्ली के तहत आज के इस शुभ अवसर पर अहमदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को ये एमएसएमई कॉन्क्लेव आयोजन करने पर और एमएसएमई विकास कार्यालय को यहाँ पर आमंत्रित करने पर कृतज्ञता अदा करती हैं। एमएसएमई की जर्नी की बात करें तो 2006 के पूर्व भारत में केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा बहुधा विनिर्माण क्षेत्र के लिए सहायक योजनाएं और नीतियाँ बनाई जाती थी और फ्लोट की जाती थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र के सम्मिलित विकास के नज़रिए में भारत सरकार ने स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट तथा एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडस्ट्रीज जो कहते हैं कृषि एवं ग्रामीण मंत्रालय, इनको सम्मिलित करके एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 लागू किया गया था और जिसके तहत केंद्र सरकार की एमएसएमई सेक्टर की जो नीतियाँ एवं योजनाएं परिचालित की जाती हैं, राज्य सरकार इंडस्ट्रीज एंड माइंस डिपार्टमेंट कमिश्नर एमएसएमई के तहत पूरे गुजरात में और अन्य राज्यों में राज्य सरकार के संकलन में हम इनका अमलवारी करवाते हैं। नए आयाम की बात करें तो हाल ही में 27 जून 2024 के दिन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे आयोजन किया गया था, जिसमें माननीय महोदय श्री जीतन राम मांझी साहब ने, केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री, दो खास अहम योजनाएं जो हैं इसको परिचालित की हैं, जिसमें खास करके सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को स्किल डेवलपमेंट, मार्केटिंग सपोर्ट और खास करके डिजिटाइजेशन, जैसे एसबीआई के महोदय साहब ने बताया कि सूक्ष्म और लघु अधिष्ठान को अपना जो हिसाब किताब है ये रिफ्लेक्ट करने की आवश्यकता है। तो इसके ऊपर जोर देते हुए और हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित करने के लिए हम जो पेड़ पौधे या कागज़ का जो वेस्ट करते हैं उसको बचाने के लिए, कम करने के लिए टीम ट्रेड मार्केटिंग, ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम लॉन्च की गई हैं, जिसके तहत 2024 में आप सभी खास करके सूक्ष्म और लघु अधिष्ठान के लिए
ये सारे मायनों को ध्यान में रखते हुए हैं और इसमें आईटी क्षेत्र के साथ साथ डिजिटाइजेशन ऑफ कैटलॉगिंग ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एवं आपको अपने सभी क्षेत्रों में डिजिटाइजेशन की अहमियत को ध्यान में रखते हुए 2024 से 27 के दौरान लगभग 5 लाख माइक्रो और स्मॉल उद्यमियों को 277 करोड़ के प्रोजेक्ट के द्वारा इन 3 साल के दौरान ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाने की हमारी नींव है। इसके साथ साथ इस योजना के तहत लगभग 50% महिला अधिष्ठान को भी इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसे यशस्विनी नाम दिया गया है। टीम अप्रोच के तहत 50% महिला अधिष्ठान को भी यशस्विनी प्रोजेक्ट पर 3 साल के अंदर अंदर मार्केटिंग एवेन्यूज प्रदान किए जाएंगे, जहां पर स्किल डेवलपमेंट भी रहेगा। आगे बात करें तो एमएसएमई टेस्टिंग सेंटर की हमारी एक संकल्पना फलीभूत की गई हैं और एमएसएमई डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस हमारी जो बिल्डिंग हैं, इसमें पेपर टेस्टिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके एक्सपर्ट के सूचन के आधार पर हमने 2023 में गुजरात में और गुजरात के आसपास के जो राज्य हैं या तो भारत भर के जो भी राज्य हैं उसमें जो पेपर उत्पादक हैं, इनको एक सब्सिडाइज रेट पर हमारी तकनीकी टेस्टिंग सेवाओं का लाभ लेने हेतु हम आपके माध्यम से अभी प्रेरित करते हैं और इनवाइट करते हैं। इसकी सफलता के साथ साथ हमने रबर टेस्टिंग के लिए भी रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सहयोग पर वार्तालाप के द्वारा रबर टेस्टिंग की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। मैं 2-3 महीने में ये रबर टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर भी अहमदाबाद में हमारे कार्यालय में शुरू हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि 3 डायमेंशनल विकास, खास करके माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को अपनी कार्यदक्षता बढ़ाना, मुनाफा बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना और साथ में जो हमारे फ्लोर पर विभिन्न प्रकार के जो वेस्ट होते हैं उसको नियंत्रित करके हम कैसे सक्षमता जनरेट करें और इंटरनेशनल लेवल पर एकल प्रमाणन के आधार पर भारत सरकार ने संशोधित करके एमएसएमई जेड सस्टेनेबल स्कीम लॉन्च की हैं, जिसके हमारे पार्टनर है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। आपके अधिष्ठान में जेड सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए और स्कीम की गाइडलाइन की जानकारी के लिए कृपया z.msme.gov.in पर जाइए। आपके अधिष्ठान में जेड सर्टिफिकेशन के लिए आप पसंद कर सकते हैं ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड। 20 पैरामीटर्स हैं, जिसमें से आप पूर्व से जितने भी पैरामीटर्स का अनुपालन करते आए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए उसके लिए आपको उस पैरामीटर के लिए एग्जम्पशन मिलेगा। 1 महीने के अंदर अंदर सिल्वर तक का जो प्रमाणन है ये विदाउट असेसमेंट आपको मिल सकता है। आवश्यकता पड़ी तो ही आपके यहाँ फिजिकल असेसमेंट हो सकता है। QCI द्वारा असेसमेंट जो चार्जेस किए जाएंगे आपके अधिष्ठान में, वास्तविक रूप से या महत्तम 2 लाख रुपए तक की आपको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और एसेसर द्वारा आपको ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट के तहत तकनीकी उन्नयन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन उस आयाम पर आपके अधिष्ठान में लागू करने पर 3 लाख रुपए तक की आपको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये जो मॉडल हैं ये पूरे विश्व भर में एकमात्र मॉडल है जो आपके त्रिपरिमाण विकास पर मैच्योरिटी कंप्लायंस के आधार पर हैं और हमारी नींव है कि इसको एकल तौर पर
पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त हों। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को इस प्रमाणन के चार्जेस में 80%, 60% और 50% के आधार पर सब्सिडी मिलेगी। एवं जब आप बैंकर से टर्म लोन प्राप्त करना चाहते हैं तो जेड प्रमाणन अधिष्ठान को प्राधान्यता मिलेगी और उनके जो चार्जेस हैं उस चार्जेस में भी आपको सब्सिडी मिलेगी। आप अपने माल को ढोने के लिए, डिलीवरी के लिए आप जहाँ पर भेजते हैं वहाँ पर जेड प्रमाणन अधिष्ठान को डिलीवरी चार्जेस में भी सब्सिडी मिलने रहेगी। और सबसे अहम बात है कि जेड क्यों लाया गया है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो संशोधित की गई 2021 में, इसमें भारत के खास करके सूक्ष्म और लघु अधिष्ठान को केंद्रीय सार्वजनिक अधिष्ठान, जहाँ पर क्वालिटी के बाबत में बिल्कुल भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाता है, वहाँ आपको त्रिपरिमाण पर सक्षमता प्रदान करने के लिए एक रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट है। तो आप जल्द से जल्द आपने अगर इसमें ओथ सर्टिफिकेट जनरेट करवाया हो तो सेकेंडरी लेवल में आप इसको कन्वर्ज करें ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड। मान्यता है 3 साल की। जिनने ब्रॉन्ज मेडल लिया है, ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, वो इनके आयाम पर देखते हुए 3 साल के अंदर अंदर कंसिक्वेंटली अपर ग्रेड सिल्वर या गोल्ड के लिए आवेदन करें। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंतर्गत 25% सुरक्षित किया गया है केंद्रीय सार्वजनिक अधिष्ठान को और केंद्रीय मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय को मात्र और मात्र सूक्ष्म और लघु अधिष्ठान से अपना प्रापण खरीदी करना रहेगा। और भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय की एक और नींव है कि टेंडर प्रोसीजर एक एकल प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और 25 लाख से अधिक के जो भी टेंडर हैं वो एक ही पोर्टल पर आपको मार्केटिंग एवेन्यूज प्रदान करता है। गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल gem.gov.in। जिन जिन अधिष्ठान ने अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन अपडेट नहीं किया हो तो उद्योग आधार मेमोरेंडम पर अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर ले, जिनके आधार पर भारत भर में जितने भी टेंडर्स होते हैं, नंबर ऑफ टेंडर्स, इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट करने की एक सुविधा प्रदान करता है। राजकोट में एक नए आयाम पर एमएसएमई मंत्रालय ने अहमदाबाद में जो IGTR इंडो जर्मन टूल रूम जो परिचालित है हमारा इंडस्ट्री एकेडमिया एमएसएमई मंत्रालय का, उसी मॉडल पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 60-40 के मॉडल पर एक नया तकनीकी केंद्र IGTR बुढ़ावा विलेज गोंडल तहसील के अंतर्गत राजकोट में कार्यान्वित हो जाएगा। इसका भारत भर में 14 सेंटर्स के लिए भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय ने टेंडर भी जारी किए हैं। करीबन 900 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 3 साल में ये परिचालित किया जाएगा। अहमदाबाद नॉलेज ऑफ चैम्बर एंड इंडस्ट्रीज तथा गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और विभिन्न इंडस्ट्री एसोसिएशन के लिए एक खुशी की बात ये भी है कि हाल ही में हमें एक मंत्रालय से ईमेल आया हुआ है कि जैसे तकनीकी केंद्र जो हम राजकोट में प्रस्तापित करने जा रहे हैं, तो ऐसा ही अहमदाबाद के शाणंद में और सौराष्ट्र रीजन के लिए भावनगर में भी हमें एक कंसेप्ट नोट या ब्रीफ रिपोर्ट तैयार करने की सूचना प्राप्त हुई है। तो आशा रखते हैं कि आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसके पर हमारे मंत्रालय का एक सन्निष्ठ प्रयास रहेगा और इसमें आप सभी की साझेदारी बहुत अहम आयाम पर हमें प्राप्त होगी।
भारत सरकार ने एमएसएमई के अंतर्गत खास करके माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को अपनी सक्षमता कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 358 आइटम सुरक्षित किए हैं जो मात्र माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चर करेंगे। उसके साथ साथ में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर एमएसएमई मंत्रालय ने चैम्बर्स और एक्सपर्ट्स के जो मंतव्य मिले हैं उसके आधार पर 43 आइटम्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें हम आपको आमंत्रित करते हैं कि इसमें आप आगे अपना नया अधिष्ठान प्रस्तापित करें। और अगर आपके पास और भी प्रोडक्ट के लिए ऐसी कोई फिजिबिलिटी शक्यता दिखाई दे रही है, संभावना, तो आप हमसे संपर्क करें और इसके पर पेपर तैयार करके हम भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में और भी प्रोडक्ट को सम्मिलित करने के लिए हम सूचन कर सकते हैं। आईपीआर आपके नवीन आइडियाज़ हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, तो आप आइए हमारे पास। चैम्बर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के तहत आईपीएफसी हमने प्रस्तापित किए हैं, जहाँ पर सरकारी सहायता से आप अपना आइडिया सुरक्षित रख के कंसेप्ट पेपर के साथ आइए। आपके पास प्रोटोटाइप नहीं है तो हमारी आईपीएफसी में प्रोटोटाइप विकसाने की आपको सहायता प्रदान की जाएगी और इसके बाद इसको कमर्शियलाइजेशन तक का भी आपको सहायता हमारे आईपीएफसी द्वारा मिलेगा। और इनोवेटिव आइडियाज़ में अपना नया अधिष्ठान शुरू करने के लिए भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय द्वारा बैंकर से कम रियायत दर पर 1 करोड़ तक की लोन की सुविधा भी आपको प्राप्त रहेगी। मार्केटिंग के लिए आपको प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम एमएसएमई मंत्रालय, हमारी सिडबी जो बैंकिंग हमारी सेक्टर है उनके द्वारा भी व्यापार मेले आयोजित किए जाते हैं। तो साल भर में लोकल, रीजनल या नेशनल लेवल के जो एंटरप्राइजेस के एग्जीबिशंस होते हैं, इन एग्जीबिशंस में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो 2 बार आपको वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। आप सभी से निवेदन है कि हमारी एकल पोर्टल dcmsme.gov.in पर जाइए और वहाँ पर आपको माई एमएसएमई दिखाई देगी, जहाँ पर हमारी सारी प्रोडक्ट ऑनलाइन रखी गई हैं और हमारी स्कीम्स की गाइडलाइन, कैसे आपको आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है, आवेदन करने के बाद आपका फीडबैक और आपकी पार्टिसिपेशन का आपको इसमें रिम्बर्समेंट के लिए आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। आरटीजीएस थ्रू आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये डिजिटाइजेशन का एक उत्तम उदाहरण है। पीएमएस के तहत भारत सरकार ने पुनः बारकोड की स्कीम भी परिचालित की है, जिसमें एक अधिष्ठान में मैन्युफैक्चरिंग में आपकी जितनी भी प्रोडक्ट हैं, जिनने बारकोड नहीं लिया है तो आप बारकोड लेते हैं GS1 अथॉरिटी से, तो 100 नंबर तक आपको पहले साल की रजिस्ट्रेशन फ़ी और 3 साल की रिन्यूअल चार्जेस के साथ महत्तम 50,650 रुपये तक की आपको सहायता मिलेगी। खास करके माइक्रो एंटरप्राइजेस को एक्सपोर्ट में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टाइम टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस CBFTE योजना लॉन्च की गई है, जिसके अंतर्गत जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज प्रथम बार डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो RCMC प्रमाणन पर तथा जो कंट्री में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसके टेस्टिंग करवाना पड़ेगा। इस टेस्टिंग में भी आपको नियम अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मार्केटिंग और स्किल्ड लेबर की बात चल रही है सभी प्लेटफॉर्म पर, तो भारत सरकार ने 2017 में MSME संपर्क पोर्टल परिचालित किया है।
IGTR एवं लार्ज इंटरप्राइजेज जो हैं ये क्लाइंट इस पोर्टल पर पंजीकृत हुए हैं और साथ साथ में एंटरप्राइजेज भी जो हैं साइन अप करके यहाँ पर आसान तरीके से और कम समय में आप अपने अधिष्ठान के लिए स्किल्ड वर्कर या लेबर आप सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। आपके किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं, समस्याएं हैं, कोविड के दौरान इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्यक्ष मुलाकात के पर काफ़ी रोक लगाई गई थी और हम कोविड की इफेक्ट से बाहर आए हैं। उस दौरान champions.gov.in ये पोर्टल परिचालित किया गया है कि आपको एक सक्षमता प्रदान करें और हम उच्च आयाम पर आप लोगों को ले जाएं। आपकी बैंकिंग की समस्याएं, आपकी पॉल्यूशन की समस्याएं, आपकी अधिष्ठान की किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, 24/7 champions.gov.in पोर्टल पर आप हमें ग्रीवेंस आपकी भेज सकते हैं। मात्र 48 घंटे में आपकी समस्या को सुलझाने के लिए हम जो भी अधिष्ठान हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके नोडल ऑफिसर्स या तो हाईएस्ट अथॉरिटी तक ईमेल से हम इनको सूचित करते हैं और समस्या का समाधान करने का सन्निष्ठ प्रयास करते हैं। जैसे अभी भी लॉन्च हुआ कि एक इंटरनेशनल समिट होने जा रही हैं, तो भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ MSME का पोर्टल है ic.msme.gov.in, जहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री एसोसिएशंस इंटरनेशनल सिंपोजियम्स, वर्कशॉप, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए स्टडी करना चाहती हैं किसी भी कंट्री में, तो अपने डेलीगेशन 20 से 25 MSMEs का डेलीगेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अग्रिम अनुमोदन के पश्चात इसमें ले जा सकते हैं और इसमें भारत सरकार आपको 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। ic.msme.gov.in पोर्टल साल में 2 बार ओपन होती है, वर्ष के शुरुआत में और अभी लगभग ये अगस्त में 1 महीने के लिए पोर्टल परिचालित होगी। तो आपके माध्यम से हम गुजरात के सभी चैम्बर्स और एसोसिएशन को ये निवेदन सूचना देते हैं कि आप अपना डेलीगेशन तैयार करना चाहते हैं आगामी वर्षों में या तो आगामी वर्ष में जो 24-25 के अंतर्गत, तो आप ऑनलाइन अपना आवेदन इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। आजकल डिले पेमेंट की समस्या को लेकर 43BH आने के कारण काफ़ी लाइमलाइट में है। वैसे तो ये पुराना नहीं, 2006 MSME एक्ट के तहत डिले पेमेंट की समस्याओं के रुझान के लिए भारत सरकार ने पूरे राष्ट्र में और केंद्र शासित प्रदेश में इंडस्ट्रीज अनुभाग के साथ काउंसिल का फॉर्मेशन किया ही और आपकी डिले पेमेंट की कोई समस्या है तो आप ऑनलाइन समाधान.msme.gov.in पर आप अपनी ये जो डिले पेमेंट की नंबर ऑफ आपकी डिले पेमेंट की इश्यू हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ये आ जाती हैं स्टेट लेवल में और स्टेट लेवल में आपकी फैसिलिटेशन के लिए सचिव श्री गुजरात सरकार ने इंडस्ट्रीज एंड माइंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट ऐसे जो 5 अच्छे जो अग्रिम MSMEs कंसंट्रेशन हैं, वहाँ पर जिला उद्योग केंद्र के जो जनरल मैनेजर हैं उनको विस्तृतीकरण में एम्पावर किया हुआ है। तो आगामी समय में आपकी ये जिले की जो भी समस्याएं उनकी सुनवाई इन जिलों में की जाएगी, बाकी की सुनवाई गांधीनगर कमिश्नर MSME की अध्यक्षता में की जाएगी। इसमें भी हाल एक चीज़ नवीनीकरण में है, आप सभी की सहूलियत के लिए
कंसिलिएशन को दूर करके भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय मीडिएशन ला रही है, क्योंकि कम से कम समय में आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके बारे में नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द हम आशा रखते हैं प्राप्त हो जाएगा। और एक चीज़ ये कि आपकी डिले पेमेंट की कोई समस्या ही उत्पन्न न हो तो कैसे मज़ा आ जाए। भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय, पीएमओ टास्क फोर्स कमेटी, प्रधानमंत्री की सूचना से और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके संकलन में ट्रेड्स रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म परिचालित किया गया है, जिसमें 3 फिनकॉर्प कंपनियां पंजीकृत की गई हैं, आरएक्साइल, invoicemart.com तथा m1exchange.com। आपके क्लाइंट को और आपको इन तीनों में से किसी प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करना रहेगा, जिसके आधार पर आप जब भी बिल्टी सप्लायर प्राप्त करते हैं और आपको भेजते हैं रिसीव करके, ये बिल आप इस जो भी प्लेटफॉर्म पर आप मेंबर बनते हैं वहाँ पर आप फ्लोट करिए, नंबर ऑफ बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट करिए और बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस पर आपको अपना बिल डिस्काउंटिंग करने की एक सुविधा प्रदान की गई है। और आपकी प्रोडक्शन साइकिल, आपकी उत्पादकता, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक खूब उपयोगी टूल आपके लिए परिचालित किया गया है। दूसरी ये चीज़ है कि कोई भी मीडियम, माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज अपने अधिष्ठान के लिए पब्लिक में जाना चाहती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एसएमई स्टॉक एक्सचेंज पर, तो आप अगर हमारे साथ आते हैं तो हम आपको फैसिलिटेट सुविधा प्रदान करते हैं कि ऐसे जो भी गोष्ठी का आयोजन करें तो इसमें हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो एक्सपर्ट्स हैं इनको भी इनवाइट करें। वी आर हैविंग इनबिल्ट कैपेसिटी ऑफ 125 पार्टिसिपेंट ऑडिटोरियम इन आवर ऑफिस, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन को हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं और आपको आमंत्रित करते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी योजना पर सेपरेट हमें कार्यक्रम आयोजन करना है तो हम आपको सहर्ष आमंत्रित करते हैं। पुनः आपको एक चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारी dcmsme.gov.in वेबसाइट देखिए और वहाँ पर माई MSME, जहाँ पर हमारी सभी प्रोडक्ट ऑनलाइन की जा चुकी हैं। गुजरात में अहमदाबाद में MSME विकास कार्यालय तथा सौराष्ट्र रीजन के लिए MSME विकास शाखा कार्यालय राजकोट तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली तथा दीव और दमन के लिए सिलवासा में हम वर्कशॉप सुविधा के साथ उपलब्ध है। इस सम्मेलन में हमें इनवाइट करने पर अहमदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पुनः मैं धन्यवाद अदा करता हूं और मंच पर आधीन सभी एक्सपर्ट को हमारे कार्यालय की ओर से प्रणाम, धन्यवाद। माननीय महोदय श्री, आपके महत्वपूर्ण संबोधन के लिए और आपके मार्गदर्शन और आपकी उपस्थिति के लिए हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। To close this segment, we have Dr. Amit Joshi, Director at KCCI, to deliver the vote of appreciation. Over to you, sir. Good morning. ज्ञान अनंत है, knowledge is infinite. एंड यही मोटो के साथ हम नॉलेज चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बहुत सारी इकाइयों में काम कर रहे हैं। नॉलेज चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक यंगेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड वी आर फोकसिंग ऑन नॉलेज प्रोग्राम्स, knowledge dissemination to the MSMEs as well as to various other bodies and our members.
Further, Knowledge Chamber of Commerce and Industry is open for membership. The 3 years membership is already complimentary and it is available digitally on the website. You can just log into www.knowledgechamber.org and you can use that portal to create your membership. Just fill some details and you will be on board with us. Further, Knowledge Chamber of Commerce and Industry is also present in 28 different wings in India, as well as 10 international wings outside India. And we have a variety of sectors which we are working with sector chairmen all across the India. I think most of them are here also, which have been felicitated this morning. And I request every one of you to kindly join the hands with Knowledge Chamber of Commerce and Industry to organize things, to promote knowledge, to disseminate knowledge, and to bring together the people or the entrepreneurs who are actually in need of knowledge, where they can start some enterprise, they can start some SMEs, and they can work together with the vision to create the Viksit Bharat of 2047, which is our Honorable Prime Minister's vision. I also thank all the dignitaries who are sitting here on the dais, including our Western Region Chairman, Dr. Durgesh Agarwal, who has done a lot of things for this particular program specifically, as well as he is the chairman for last 1 year, and we really thank you, sir, for all your support which has been raised. I would also like to thank all the dignitaries who have come all across from different parts of the world, from Indonesia, from Russia, and the British Deputy High Commission, who is the Commissioner who is already here, and from the Kotra as well. So thank you very much for your kind presence in this inaugural session. And I would like also to thank the DGM of SBI, who is present here, and we really thank you, sir, for your presence. I would also like to thank Mr. Bharat Patel, who is our Honorary Secretary General, for his contribution and for his support throughout for last 6 years of journey of KCCI. I would also like to put on record the contributions made by all our chairmen who have been felicitated one by one, and this 6 years has been very long, creating nudge by nudge, and we are here today. This program would have been so grand if the Honorable Chief Minister would be here, but anyways, I think with all your support and all your presence, we are really proud, and we will work together with you all to create this Viksit Bharat of 2047. One last thing, I would also like to give a brief idea of today's program. We have 2 panel discussions just after this. One is with all the speakers of various banks and all the promoting partners of ours, and one is the speakers promoted by all our chairmen. So do join us for that. And post that session at 4 o'clock, we have a fashion show which has been totally hosted and contributed through Anant National University. I think Madam is already here. So that will be a huge thing, and that is on the theme of sustainable environment. And post that, we have an award celebration ceremony. So I would request you to please be here till 6 p.m. and you will definitely take much of the things with you. I would also put on record all the efforts made by the sponsors, and they are there present in their stalls. So do visit those stalls and try to create and try to interact with them, that how they can be useful to your enterprise, to your organization. And with this, I think we will have a wonderful day today. And please join us in the endeavors which Knowledge Chamber of Commerce and Industry is going in a way forward, because we always believe that we are stronger together. Thank you so very much. Thank you, Mr. Amit, for those overwhelming words of appreciation. We now wish to hand over the mementos to the esteemed dignitaries present on the stage, and to do the honors, I would request Mr. Durgesh Agarwalji to kindly present the memento to Shri T.K. Solanki sir.
Thank you very much. Would request Mr. Durgesh Agarwalji and Mr. Bharat Patel to hand over the memento to Mr. Rajesh Pushpagadan. Would request Mr. Bharat Patel to hand over the memento to Mr. Evthuk Alexander, head of the CSCP Russia. Would request Mr. Amit Joshi to hand over the memento to Mr. Evizel Abdul Qadir, Informatics Engineering Department, UIR, Indonesia. Would request Mr. Amit Joshi to hand over the memento to Mr. Stephen Hickling, British Deputy High Commissioner. Thank you. And would request Mr. Nakul Prakash Lakhe, Director KCCI, to hand over the memento to Mr. Q Nam Kim, Director General Koryo Trade Investment Promotion Agency, Kotra. Thank you very much, gentlemen, and we wish all the very best to everyone present over here on the stage. Thank you. Can we have a big round of applause for all the esteemed dignitaries who were present here for the inaugural session? ભરત પટેલ છું અને કેસીસીઆઈની અંદર સેક્રેટરી જનરલ છું. સર, આજનો શું ઇવેન્ટ હતી અને લોકોને કેવી રીતે માહિતી આપી? નોલેજ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું આ 6th યર ઓફ એન્યુઅલ ફંક્શન છે અને આની અંદર એમએસએમઈને ખાસ આપણે પ્રાધાન્ય આપેલું છે જે મીડિયમ અને સ્મોલ એન્ટરપ્રાઇઝીસ છે એનું યોગદાન જે ભારત દેશની અંદર જે આપણે જીડીપીની અંદર યોગદાન છે એને પ્રોત્સાહન વધારે આપવા માટે અને દરેક ક્ષેત્રની અંદર જેની અંદર ફાઇનાન્સ પણ આવી જાય અને બાકી બધા ક્ષેત્રની અંદર હોય એ બધાની એક પ્લેટફોર્મ પર લાવવા માટેનો પ્રયત્ન છે. કેટલા લોકો આજે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને મુખ્ય વાત શું કરવામાં આવી? લગભગ 500થી વધારે ઓવરઓલ પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે. 800નું રજિસ્ટ્રેશન છે. બાકી લોકો પણ હજી અત્યારે આવી રહ્યા છે અને આની અંદર જે સરકારની પણ સ્કીમ્સ છે અને એ સિવાય જે બેન્કિંગ સેક્ટરની અંદરથી જે ફેસિલિટીઝ આપે છે એના બધાનું ચર્ચા થઈ છે અને લોકોને સ્કીમનું કઈ કઈ ફેસિલિટીઝ અવેલેબલ થઈ શકે એના કયા સેગમેન્ટ્સમાં મળી શકે તેનો આખું માહિતી આપેલી. નામ દુર્ગેશ અગ્રવાલ, ચેરમેન વેસ્ટર્ન રિજન KCCI. સાહેબ, આજે શું મહત્ત્વની વાતો થઈ છે અને લોકોને કેવી રીતે અવગત કર્યા? इंडस्ट्री जो है वो लास्ट कुछ सालों के अंदर में काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो रहा है. इसके अंदर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है AI का. दूसरा, जिस तरीके से वर्ल्ड एक हो रहा है, KCCI का मेन रोल ये है कि हम नॉलेज को किस तरीके से शेयर करें ताकि छोटे से छोटी कंपनी जो बड़ा बनना चाह रही है उसे हम सपोर्ट कर सकें. इस तरीके के जो हमारे कन्वेंशंस हो रहे हैं उसके अंदर में हम अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से लोगों को बुला के उनकी क्या व्यू पॉइंट है, उनकी क्या सोच है, वो हमारे यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स के सामने रख रहे हैं ताकि उनकी ग्रोथ जर्नी ईजी हो सके. KCCI का मेन मूल रीज़न इस फंक्शन का ये रहा. કયા કયા દેશોમાંથી લોકો આવ્યા હતા અને એમણે શું માહિતી આપી અને આપણા ત્યાંથી શું કેવા પ્રકારનું આદાન પ્રદાન થયું? हम लोग काफ़ी लकी है कि इस बार वर्ल्ड की जो मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ है, इंडिया उनमें से सबसे टॉप पे है. उसके साथ साथ में मलेशिया, इंडोनेशिया, रशिया, सिंगापुर, यहाँ के लोग आज प्रेजेंट हैं हमारे बीच में. इनके अफ्लुएंट इंपॉर्टेंट लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो भी आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं. तो उस प्रकार से ये समारोह आज का इतना इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग इसका फ़ायदा ले पाएंगे उनको डेफिनेटली नॉलेज और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड के अंदर में बड़ा कंट्रीब्यूट पता चलेगा.